Yes. Yeah, hi. So I think the biggest challenge we all should I think accept is that we don't know how to approach the stranger. For like we are visiting GloPAC events, so for us there will be many strangers, Mhm. which which are the prospective you see connects for us. But I think the biggest challenge is we don't know how to approach them. Okay. ठीक है. Fair enough. Sure. I'll cover that. Anybody else? Any situation you've faced and anything that, okay, this is something you're not very comfortable with, or you didn't get the best result out of any event, ऐसा कभी कुछ लगा? Any particular challenges? Okay. Chalo. So let's uh, go into this. What do you think are the mistakes that you might be making in a networking event? You have made, or you generally see people making some kind of mistakes when they are attending these events? या तो आप लोग ने इवेंट्स अटेंड नहीं किए, या तो आप लोग का सबका दिमाग अभी फाइनल्स में चल रहा है. ठीक है, no issues. What I'll do is, yes, Timur, you want to say something? या मैम, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कि अभी आप जैसे कि जनरली पूछ रहे हो बराबर, तो हमें पता है कि हमें कुछ पूछना है, लेकिन जैसे आपके सामने नहीं पूछ पाते वैसे उनके सामने भी कुछ बोल नहीं पाते. कभी ऐसा भी हो जाता है इवेंट में कि जैसे अपने सामने खड़े हो सकता है अपने अपने सोच रहे हैं कि उसको अप्रोच करें कैसे भी करके बराबर, तो अपने को मतलब प्रिपरेशन नहीं होती अपनी कि भाई चलो अभी उसके साथ बात भी कर रहे हैं तो क्या चीज उसके साथ डिस्कस करेंगे, कि अपने को कैसे रिप्रेजेंट अच्छी तरह से करे कि समझो कि काम हो सकता है, जैसे कि अपने को जो करना है वो उसको देना भी है, लेकिन बॉन्डिंग जैसे रहना चाहिए ना अभी फर्स्ट मीटिंग में, वो कैसे सेटअप करना है कि जिसको अपने अपने पे ट्रस्ट है उसको कि नहीं भाई ये बंदा कर सकता है अपने काम. बराबर. दैट इज व्हाट आई फील. ओके, वेरी गुड. थैंक्स. गुड पॉइंट. थैंक्स. Okay, so I want to, before we begin with the session, I want to ask, or make you think about few points which are very important when you are going in a session. थोड़े से चीजों के बारे में आप सोचिए. Can you see the new screen? Yes, ma'am. Yes, Perfect. we are able to So see. I'll be quickly asking few questions, and I don't want the answers. I just want you to think कि ऐसा होता है क्या? Is it never, or is it sometimes, or you're always that confident? मतलब there are few questions, just think about those. Those questions will help you in the future. अभी जो भी session हम थोड़ा सा बात करेंगे, आपको और clarity आएगा कि आपका आज का position क्या है. Okay? I feel confident to talk about myself and give a very good introduction when I meet new people. Are you confident or not? हाँ या ना में अपने में जवाब दीजिए. Okay, I don't want the answers. I want you to think about it. How good are you with introductions? Okay, I'm confident of the way I carry myself as a CA. When I'm walking in that event, I'm very confident. How am I looking? How am I carrying myself as a CA? I'm confident of how I'm dressed and how do I represent myself. Now, this is very important. Actually, that depends upon opposite person. How we are introducing ourselves depends upon opposite person. If opposite person is a kind of person that I say in a good position, then it's matter how we present ourselves. Very good. I'll come to that. Good point.
इंट्रोडक्शंस डिफरेंट होते हैं और हम वैसे ही देखेंगे, ठीक है? गुड पॉइंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और हम ये कवर करने वाले हैं. आई एम वेल अवेयर ऑफ हु माई टारगेट ऑडियंस आर एंड हाउ शुड आई पिच टू देम. I'm active and well represented on digital platforms. Okay. I'll change this question a bit. People get inspired by me and people remember who I am. Okay. So I hope you've given a bit of thought on these questions. Can anybody tell me what this number is? 3,500? क्या है ये? So these are the expected people present attending GloPAC physically. Okay, this is the expected numbers. 3,500 people Wonderful. are expected to attend this event physically. I'm not talking about online, physically. Okay. So my question to you is, in that 3,500 ka crowd, how do you stand out? How will people remember you? What is your branding? आज मैं समझो 100 जन से जाके मिल रही हूँ वो इवेंट में. Okay, a very average number. If I'm meeting 100 people, how will those 100 people, उसमें से 20 जन भी अगर मुझे याद करे तो मुझे कैसे याद करेंगे? What is my branding? What helps me stand out from that bunch and that crowd of people who are there? कि अच्छा ये सीए तो वैसा था. What is your branding? Anybody confident about that? मैम इसमें मेरे को लगता है कि सपोज हम अपने एरियाज डिस्कस करते हैं किसी के साथ, Very nice. एंड उसके बाद अगर उस पर्सन की कोई क्वेरी होती है, कोई टेक्निकल इशू होता है, हाँ, तो अगर वो हम सॉर्ट कर पाते हैं फिर तो वो बंदा याद रखेगा. बराबर. ठीक है ना, कि हाँ यार उसने मेरी हेल्प करी थी, एंड उसको ये चीजें पता है कि जो मुझे इश्यूज किसी और से रिजोल्व नहीं हुए थे, या फिर कि जो चीज मेरे को किसी सीनियर से पता लगी थी वो चीज ही सेम इसने रिप्लाई करी है. ओके. सो आपका एक पॉइंट है कि नॉलेज, जब आपका टेक्निकल नॉलेज इतना स्ट्रांग हो कि सामने वाले का याद रखे कि ओके दिस पर्सन इज रियली एन एक्सपर्ट, कि आप कुछ काम में एकदम परफेक्ट हो. बराबर. मैम मेरे हिसाब से जैसे कि क्या कह रही हो? सॉरी. By discussing latest AI technology or something like that, that helps, I think. सॉरी, आपकी आवाज ना थोड़ी सी डिस्टेंट आ रही है. Hello. हाँ जी. Ma'am, by discussing latest technology like AI, artificial intelligence, and something like that, other softwares that helps to do better accounting work or any other, You all work the in work, I that? think. Ma'am, I think my concern is I'm telling about the latest technology. By discussing latest technology, you can you can discuss with all the people and ओके, make अंडरस्टूड. impression सो on other people हाँ, better. सो कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करना, राइट? सो व्हाट आई वांट, सी पीपल कैन रिमेम्बर यू. आपके पॉइंट्स को जोड़ के जो आपने बोला, पीपल विल रिमेम्बर यू फ्रॉम सम थिंग्स, राइट? फर्स्ट, या तो आपका काम बहुत ही नीश है कि लोग आपको याद रखे. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, if I'm meeting 100, hardly 2 or 3 people CAs will be an expert in AI. तो मुझे definitely याद रहेगा कि that person, that CA
was specialization, his specialization was AI, because that's a very, very niche practice. तो ऐसा या तो आपका expertise इतना strong है किसी field में, या तो आपका work is very niche, okay, then people will remember you. या आपका communication बहुत strong है. Few people are, you know, born very friendly and very communicative, that people remember, you know, that person ki okay, that person is moving around and talking to a lot of people. That's talent, किसी में होता नहीं होता, that's perfectly fine. Few people might remember you कि okay, you find some connect, जो बीच का mutual connection कभी बन जाते हैं, मिल जाते हैं, so that person will remember you. Okay, this person also knows XYZ, तो people remember you. या तो फिर या आपने उसको कुछ बेनिफिट दिया है, या उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा. जब बेनिफिशियल कुछ आता है रिलेशनशिप में, तब ऑफ कोर्स पीपल विल रिमेंबर यू. या कभी आप बहुत एफर्ट्स लेते हैं, ओके, एंड इस पॉइंट पे मैं स्पेसिफिकली बाद में बात करूंगी, एफर्ट्स लेना. जब आप बहुत एफर्ट्स लेते हो either to connect or to, you know, have some communication or conversation with the person, तब of course the person remembers you कि अरे इसने बहुत ही efforts लिए थे मुझसे मिलने के लिए या बात करने. Okay, and the last is grooming. हो सकता है you're very well dressed, or you know, you're very presentable, that people remember you. Okay, you have to find आप किस चीज में अच्छे हो, या आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है जिसपे आप कॉन्फिडेंस रख के इवेंट में जा सकते हो. You have to find that point for yourself. So I'm giving you a minute. Think about इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है that you can work upon, that can help you stand out from the crowd, that will help you build a brand for yourself. Either it is your work, either it is the way you are conversing or, you know, communicating with people, or the efforts that you're putting, or your grooming, or connections. आप बहुत ही, you know, you're very well connected with people, तो आप किसी ना किसी से connections निकलवा लेते हो. So that is a strong point for, I know personally a lot of people who are very strong with that mutual connection finding. So think, इनमें से आपका एक कौन सा strong branding point हो सकता है. Think and write it for yourself. Huh? So for me, it is my work. People remember that, okay, she's a CA and she's working in branding, because somehow very less people are CAs who are working in branding. So this automatically becomes a strong point for me. कम्युनिकेशन का भी फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. अब जैसे कि एक ठीक है, हम सीएज एक वाइट कॉलर प्रोफाइल तो है ही, ठीक है. अब ये होता है कि हम अपने फेलो मेंबर्स से साथ कैसे बात कर रहे हैं, एटीट्यूड के साथ बात कर रहे हैं, लो प्रोफाइल होके बात कर रहे हैं, फ्रेंडली हैं, तो उससे भी बंदे का बड़ा कॉन्फिडेंस और अटैच्ड फील करता है कि यार ठीक है, बंदा बड़े क्या कहते हैं, अच्छे से बात कर रहा है, ऐसा नहीं अपनी अकेडमी घूमी जा रहा है. बराबर. आप जितने फ्रीली होके बात करोगे, उतना अट्रैक्ट करोगे लोगों. ओके, सी अगर आप इवेंट में आप जनरल भी देखो, और जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर द इवेंट्स दैट यू हैव अटेंडेड, you don't generally go and talk to people who have a, you know, poker face, or you just somebody standing alone. आप generally उससे जाके बात नहीं करना चाहते. कभी कर लिया ठीक है, but you tend to talk to people who are more friendly, or who is smiling, or who's, you know, making efforts to talk to people. आप उनसे बात करना चाहोगे, right? In the same way, कोई भी आपसे आके बात करना चाहेगा जब आपका वो फ्रेंडली कम्युनिकेटिव वो वाइब होता है, ठीक है, वो एक एनर्जी होती है आप में, पॉजिटिव एनर्जी, जिससे लोग आके आपसे बात करते, तो वो आपको रखना पड़ेगा. अ फ्रेंडली, प्रशांत जी ने जैसे बोला, अ फ्रेंडली, यू नो, एक ओपन ऐसा नेचर. ठीक है, आई होप एवरीबडी इज रिटन दिस. नाउ टेल मी, व्हाट इज योर गोल फ्रॉम GloPAC? प्लीज नेटवर्किंग मत बोलना, दैट इज अ जेनेरिक आंसर. घूमने जाना है. सॉरी, घूमने जाना है. इसी बहाने घूम भी लेंगे. हाँ, मेरा भी वो गोल था, बट उसका कचरा हो गया. ठीक है,
So मैं तो फ्लाइट टिकट बुक करके कैंसिल भी कर दिया, फिर वहां से आई एम गोइंग टू द्वारका, सोमनाथ एंड ऑल दैट. ओ अरे वाह, नाइस. So my goal from this GloPAC is I want to get connected to the CPAs. Very nice. Okay. CPAs, CA and CPAs, those who are Mhm. practicing in India. Very fantastic. Very nice. Good. And I see good number of people who are doing this already in this Uh-huh. Gujarat side, Ahmedabad, Surat and all that. Okay, fantastic. Great. Write Yeah. it down now because we need this in the next step. Very good, Okay. Raghavendra. Thank you. Yes, Vinita, you were saying something. yeah, hi everyone. I'm Vinita from Mumbai. I have a goal, but it is very, very, very wide. There is nothing specific and concrete the way my other fellow colleagues have shared. Okay. So I have been into banking. I have been working with banking industry since last 18 years now. Okay. And now going forward, I wish to explore an alternative career for myself. Okay. So I'm just looking forward for such this event and any other event like this to give me a little horizon and understanding on what I have what I was not part of all these previous years. Like, my networking, my knowledge, my study, my everything was related to banking and that particular organization. Networking भी हो रही थी तो उन्हीं लोगों के बीच में हो रही थी, be it through LinkedIn or physical meetings or attending some webinars or seminars, anything. So I'm looking forward to this event and this opportunity to enhance the networking outside the banking industry and explore opportunities which into some kind of an alternative career for myself for going forward. Very nice, Vinita. All the very best. There is also the regional conference on 15th and 16th in Mumbai. NESCO. 15th of December. Yes, 15th and 16th Okay. in NESCO. You can explore that also. Thanks. Most welcome. So I think Vinita, for you, of course, आपका goal wide है, but yet what I can suggest is concentrate a lot on the exhibitions. ठीक है, जो company stalls वगैरह लगाएंगी, है ना? Go and talk to them a lot because they come up, by experience, they come up with very good new products and new services that CAs and other companies are providing. I think that will also give you a lot of more exposure into, what is happening around. And second, try to speak more to, mid-level CAs, okay? Who are still, who have good amount of experience but are also ready to explore more things. So because they, again, like you, they want to explore more, तो उन लोग उसी direction में सोचते हैं. You will also get a lot of ideas. New CAs के साथ आप उतना शायद नहीं conversations कर पाओगे because even they don't have that much of an idea. And very experienced CA, of course, they have a lot of ideas, but जो इतना एक्सप्लोरिंग वाला पार्ट है या तो लर्निंग वाला पार्ट है उनका नहीं होता है उतना. सो आई थिंक जो people who have practiced for like 7-8 years to 15 years का जो range है ना, those people will really help you in getting you think more and explore newer areas of work. Sure. तो वो आपका गोल हो सकता है. Sure. Thanks. Most welcome. So I hope everybody has written their goals, specific goals. Anybody else wants to share? मेरे को लगता है एक और चीज का भी फर्क पड़ता है. हाँ जी, बोलिए ना. जैसे अब हमारे क्लाइंट्स को नहीं पता ग्लोपैक क्या है क्या नहीं है, ठीक है. अब जैसे हम अपना सोशल मीडिया पे जैसे उस चीज को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो उनका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होता है कि यार नहीं, हमारा सीए तो देखो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट भी बनता है, ठीक है, ठीक, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी है. उस चीज से वो बड़ा मतलब खुश भी होता है एंड और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ, मतलब एक वो कहते हैं ना कि अगला
फील करता है कि हाँ मैं एक ब्रांडेड सीए के साथ हूँ, एसोसिएटेड हूँ, रादर देन कि एक लोकल सीए. Perfect. Very nice. Well said, Prashant. So, see, we can have एक goal, of course, एक primary goal हमारा हो सकता है. उसके साथ we can have different goals attached to it. जैसे one of the goals, जैसे प्रशांत जी ने बोला कि it is more about the branding and the exposure that you are getting there. Of course, वो भी है. But I really want everybody to write a specific goal because that will help in our next step. So see, आपके goals क्या हो सकते हैं? आपको वहां से clients चाहिए या आपको collaborations चाहिए. ठीक है, collaborations के sense में आपको work wise diversify करना है या आप partners ढूंढ रहे हो in the new cities or partnerships ढूंढ रहे हो. You're searching for some synergies you want to work with, or you want to just make friends. Your goal can be anything. But I want you to be very specific कि आपका goal GloPAC में जब आप जा रहे हो, आपके दिमाग में क्या है? See, क्यों this is very important. See, वहां पे 3000 plus लोग हैं. आप randomly लोगों से मिलने जाओगे ना, तो उसका अंत ही नहीं है. और फिर क्या होगा? You won't get anything out of it. But if you have a particular goal कि मुझे इन टाइप के लोगों से मिलना ही है, okay, make sure कि for example, if you want to, you're searching for diversification कि I have an expertise in XYZ, I want partners or somebody else who is expert in ABC and you want that collaboration to happen. So आपको पता है मुझे at least 30 to 40 ऐसे लोगों से मिलना है जो इसमें एक्सपर्ट है. सो आई कैन सी कि मैं इसके साथ कोलैबोरेट कैसे कर सकूं, मैं डिफरेंट सिटीज में अपना ब्रांच कैसे बना सकूं. यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन आपको किन लोगों से बात करनी है, अदरवाइज यू विल बी ऑल ओवर द प्लेस और आप जेन्युइनली कुछ उससे ले नहीं पाओगे. सो आई होप एवरीबडी इज रिटन देयर गोल वेरी स्पेसिफिकली. Yeah, hi. Myself, Hi, Pramod Parmar from Mumbai. I have last year only I have formed an alliance of CA firms, SkyMap and Alliance. So we are 39 CA firms having offices in 54 cities. So my goal is to add more members from different cities, which are not common. So I'm looking for that only. And अलग CAs भी have you in mind? Do you have in the cities, particular cities in mind, and do you have any specialization in mind? No, cities in mind. First, I would like to complete the cities. Perfect, very nice. And then your priority is कोई चीज में expert है या कुछ specialization है, right? Right. Okay, perfect. Just write this down, okay? Yeah. Sir, please kindly share your profile in chat box. Yeah, sure. We are in the same WhatsApp group. No, I'll share in that WhatsApp group only. Sure. Okay. Super. Now, who is your target audience? जो आपका गोल है उसी से रिलेटेड आपके टारगेट ऑडियंस होंगे. ओके, लाइक आई सेड, टारगेट करो ऑडियंस को और उसी हिसाब से लोगों से बात करो. डोंट जस्ट गो एंड स्टार्ट स्पीकिंग टू एनीबडी एंड एवरीबडी. ऑफ कोर्स वो भी करो, एंजॉय योरसेल्फ, बट हैव पर्टिकुलर गोल इन माइंड. एंड ये गोल आप आगे भी कैसे यूज करोगे ऑन योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आई विल स्पीक अबाउट दैट. आई एम अ प्रैक्टिसिंग CA in Surat in the field of income tax and GST. Now I want to start outsourcing practicing. This is very nice, very good, Sailesh. Super. So I know somebody, I think, who can help you or you can collaborate with. We'll talk about this later. Just keep this in mind, Shailesh, okay? Okay. What happens and why this is important? Chalo, in next step, somebody was saying something. क्यों ये गोल्स क्लियर रखना और बताना जरूरी है, ये मैं आपको बताऊंगी. So don't target too many people, but target the right people. तभी you can get the ROI. Okay. Now introductions. So what happens is when you are meeting so many people in the event, या तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटा होता है
या तो बहुत ही लंबा होता है कि सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता है बात करने का, राइट? यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज आपके इंट्रोडक्शन में, सो दैट बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, यू हैव टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी स्पेसिफिक और आपका गोल पता चलना चाहिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आवर goals, our introductions. Okay, people, I think 5 or 6 people just joined us. We discussed about what is your goal at GloPAC, what kind of audience are you targeting in GloPAC. Okay, you're not targeting everybody, you will be targeting and you will be talking to specific target audience. ये दो चीज पे हमने बात की है, उसके इंपॉर्टेंस पे बात की है. I'll share the PPT with everybody later. And how we will identify the target audience? Good question. वो हम बात करेंगे. Okay. So let's practice the introduction. Now this is a very generic structure of introduction that will be short yet very specific of your goal from GloPAC and your career goal, कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या है और आप किस तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करते हो. Okay, say for example, hi, I am CA Parinita Adukia. I have my own company called Portraiture. I work with other chartered accountants and company secretaries and help them in developing a brand for themselves so that ethically they can grow and they can really become an authority in their work and grow their practice. This is what I do. So what happens is I'm very clear in my introduction, the kind of work that I'm doing, the kind of clients I'm working with, and how do I help them. Okay. See, like I said, हमारे पास time बहुत कम होता है networking events में अपना full introduction देने के लिए. What I want you to do is, in a short para, prepare an introduction which talks about your niche, the kind of clients or the kind of people you want to work with, and what is your goal from GloPAC. अगर आप उसको cover कर पाओ, that will be the best. So what you want to achieve is what you want to achieve from GloPAC. Now, why this is important? Say I come and meet you and I talk about, I say, for example, Shailesh is going and meeting people and saying, I'm based in Surat and I work in income tax, but I'm looking to diversify and outsourcing work. Now, जैसे मैंने ये पढ़ा था Shailesh का, I know I don't do outsourcing, but I know somebody who does that and can help Shailesh set up the work, or at least guide him how to do it. So always remember, networking events में networking is not always direct. It is via. ठीक है, आप एक जन को जानते हो, वो 10 जन को जानेगा, राइट? उसमें से वो आपको किसी के साथ कनेक्ट करेगा. That is actual networking. Networking is not always one-on-one. नेटवर्किंग इवेंट्स में अगर आप 30 बहुत अच्छे कनेक्ट्स बना लेते हो, मतलब 30 जन से अच्छा कॉन्वर्सेशंस कर लेते हो, remember those 30 people know hundreds of people more, and that is how you network. Don't target hundreds of people there. Okay, अगर आपको लग रहा है कि वो person, now coming to your question, Gaurav, there are 2-3 ways in which you can identify the target audience. One is, first is LinkedIn. कैसे यूज करना है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी. Second is, of course, आप सबको, मतलब किसी के लिखा नहीं रहता है कि कौन कितना है, but you have to form a very generic demographic. ठीक है? So for example, I'll give you mine. जब मैं वहां जा रही हूँ, मुझे पता है मेरा गोल है is to target practicing CAs who have been in the practice since like 5-6 years and now want to expand, जो बहुत old भी नहीं है, बहुत young भी नहीं है, okay, who can invest in branding for themselves. So मेरे दिमाग में एक demographic है
कि anybody from the age of say 27, 28 to 35, 40 is my target audience. Okay, so I know जो practicing CA में इसमें बैठते हैं is my target audience, so I'll go and talk to them. जैसे मैंने विनीता को भी बताया कि आप किनको टारगेट कर सकते, राइट? नाउ ऑफ कोर्स खाली फेस से भी या आप उनको नहीं पता चलता है. हैव शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस. आपको जैसी लगे शायद दिस पर्सन्स प्रोफाइल डज नॉट फिट माइन, एक्सक्यूज योरसेल्फ, फ्रेंडली वे में, बट एक्सक्यूज योरसेल्फ. ओके, अगर आप ढूंढ सकते हो तो उनको डायरेक्ट अपना गोल बताइए. इफ यू फील directly a person is not related to what I am looking for, tell your goal to that person ki I have this goal, do you know anybody? Be very clear in networking events. Okay, do you know anybody? If you feel ki nahi mil raha hai connect, excuse yourself and go and network with other people. Okay, Gaurav, but maximum time I see opposite person is not interested in talk to you. Good question. चलो उसका भी solution दे. See what happens is अगर आप 100 लोगों को मिल रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 15 या 20 ही बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे आपसे बात करने के. सो बी फर्स्ट ऑफ ऑल बी ओके दैट नॉट एवरीबडी इज दैट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू. चलेगा. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन पीपल जो आपको लगता है आर नॉट वेरी ओपन और नॉट वेरी ओपन टू टॉक. Second, when you feel that people are not talking too much because everybody has their own reasons. That person might be shy or that person does not know how to have, conversations. The best thing is try and see ki aap, and this answers Ankit Gupta's question also, ki how do you talk to strangers? When you are approaching strangers, first of all, few things that matter is your body language and the energy that you carry. Okay, don't have a very authoritative and very aisa head held high wala attitude. Be very friendly when you're approaching to people. Okay, second, people love talking about themselves in the way when I keep asking some questions to that person. और सारा काम रिलेटेड नहीं. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन नेटवर्किंग इज आप काम से रिलेटेड बातें करोगे, यस, बट सेकेंड यू हैव टू ऑल्सो मेक अ पर्सनल कनेक्शन समहाउ. सो व्हाट आई डू इज personally what I do, I'll tell you. After the basic introduction is done, I try to understand the person's work. Okay, so I start asking questions. अच्छा आप यहाँ काम करते हैं, थोड़ा सा काम एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो अच्छा आप इस सिटी से है, अरे मुझे सिटी बहुत बढ़िया लगती है, या तो फिर उसका खाना बहुत अच्छा है, मैं वहां पे गई. स्टार्ट हैविंग अ बिट ऑफ informal conversation. If people were there at the start, the kind of conversation I had with Raghavendra in the start, where we were talking about Hyderabad. Okay, what happens is these kind of informal topics really helps people mellow down. और आप उनके बातों में और उनके काम में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तभी वो इंसान आपके काम में इंटरेस्ट दिखाए. इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक. अगर आपको लगता है सामने वाला ज्यादा बात नहीं कर पा रहा है, आस्क जनरल क्वेश्चंस. अभी तो आपके पास, सबके पास कुछ बहुत ही कॉमन टॉपिक्स होंगे, जैसे वर्ल्ड कप है, ग्लोपैक है, all these common questions, topics को लेके have informal conversations with those people. Break that ice. वो बहुत important है to know more about the person. But very frankly, if you feel you're not getting something out of the person, please move ahead. 3000 लोग हैं, it's not less. आप बहुत लोगों से मिल सकते हो. So make the best use of your time. This is all I can say. ठीक है. अगर कुछ लोग हैं जो नहीं बात कर पा रहे, आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग जो बात कर पा रहे. नाउ इफ यू आर फ्रॉम दैट कैटेगरी जो कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट नहीं कर पाते,
the best trick for you, and this is something I learned when I was learning networking. So I started my career with learning networking. 10 साल पहले जब मैं सीए बनी थी और I joined a company, my whole aim was networking. मतलब my role and responsibility में networking आता था. How I learned networking? What I used to do is, जो 2 या 3, ओके, जो 3 जन का ऑड लोगों का ग्रुप होता है ना, 3 जन है, 5 जन है, try to join them. If you are from somebody who's not very comfortable with networking, either talk to a person who's standing alone or talk to a group which has odd numbers. Even numbers में क्या होता है, उन लोग अपने में बात करने लग जाते हैं. Odd numbers में you'll always find 1 or 2 people who are left out of the conversations and try to join those conversations. Okay? This is a trick of networking. तो आप वो कर सकते हो अगर आप अकेले जा रहे हो. Make sense? Actually, I think जब भी हम ग्रुप्स में जाते हैं किसी भी तरह के इवेंट्स में, तो ये काइंड ऑफ एक कंफर्ट जोन होता है हमारा. हम उसी ग्रुप्स में रह जाते हैं. यहाँ इवन लंच कर रहे हैं, इवन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लंच और डिनर के टाइम पे ही ये पॉसिबल होता है. लास्ट टाइम मैंने मार्च में इवेंट अटेंड किया, मोर देन 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कमेटी मेंबर्स वहाँ आते थे. बट प्रॉब्लम इज लंच और डिनर के टाइम पे क्या है, जो ग्रुप में आए हैं वो अपने ग्रुप के साथ ही एज इट इज खड़े हैं. तो ये काइंड ऑफ एड ऑन कह लीजिए. तो मेरे को लगता है अगर मैं सिंगल आउट जा रहा हूँ देन ज्यादा नेटवर्किंग होगी रेदर देन हम ग्रुप्स में ही. परफेक्ट. मैंने ये बाद में पॉइंट लिखा भी है, दैट डोंट बी इन योर ओन ग्रुप. अगर आप किसी के साथ जा भी रहे हो, उसको बोलो कि हम बाद में मिलते हैं. ओके? एंड अगर आप 2 या 3 जन हो भी, तो गो स्टिल थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो टू गो एंड मूव सेपरेटली. स्पेशली lunch or tea, never have alone. Have with somebody you don't know. This is a rule that I make in networking events. I'll never have lunch or tea with somebody I already know. I'll always go and find somebody that I don't know, or that person is standing alone. आपको फील आ रहा है कि वो इंसान को बात करना है बट वो कर नहीं पा रहे. Give that comfort to that person. Okay? या तो again, like I said, 2-3 जन का ग्रुप है, उसमें घुस जाओ. This is the tricks that I use and have been very beneficial for me. So don't move along with your friends. या जो भी ग्रुप में आपने रजिस्टर किया है या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, even if that person is your partner in your firm, साथ में मत घूमो. आप कितने सारे लोगों को रीच आउट कर सकते हो अगर आप अकेले अकेले घूम रहे हो. ओके? प्लीज डोंट मूव ऑन विथ योर फ्रेंड्स. फिर क्या होता है, जब आप अपने कॉलीग के साथ या फ्रेंड के साथ यू आर मूविंग अराउंड, people will see that you already know this person अच्छे से, so they also don't come and talk to you that much because you're already engaged in conversation. तो कोई आके आपसे बात करना भी नहीं चाहेगा कि अरे ये ऑलरेडी टुगेदर कितने देर से. okay? So detach yourself. बट ये तो मेनली मैम चैलेंज रहता ही है, बिकॉज हम जैसे कमेटी मेंबर हैं, पूरी कमेटी के साथ के जा रहे हैं, तो फिर कमेटी वाले बोलते हैं अरे यार आप तो मुझे छोड़ के चले जाते हो, जब जहाँ जाते हो अकेले निकल पड़ते हो. आप मिलो, ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम भी छोड़ दो, बट कुछ टाइम निकालो कि जहां पे आप आई अंडरस्टैंड फ्रेंड्स के साथ जाते तो मन भी करता है उनके साथ रहो, बट मेक श्योर आई एम सॉरी okay, make sure that you are detaching yourself from the group for some time at least. उतना आपको रूल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप नेटवर्क नहीं कर पाओ. ओके? एंड बी क्लियर विथ योर ग्रुप कि आई एम गोइंग, लेट मी नेटवर्क फॉर सम टाइम, हम चलो वापस मिलते हैं. ऐसे बी क्लियर टू देम.
आई होप सबने अपना इंट्रोडक्शंस बना लिया ना. एक पॉइंट किसी ने बहुत अच्छा बोला था कि आपके इंट्रोडक्शंस अलग ग्रुप के लिए अलग होगा. ओके आपका क्लाइंट्स के लिए, अगर आप कोई क्लाइंट आपको मिल रहा है वहां पे, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग होगा. अगर आप किसी कोलैबोरेशंस के लिए मिल रहे हो, आपका इंट्रोडक्शन अलग होगा. किसी आप दूसरे सीएस को मिल रहे हो, आपका इंट्रोडक्शन अलग होगा. यू नीड टू ट्वीक योर इंट्रोडक्शन. आप जिसको मिल रहे हो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सीइंग कि उस बंदा क्या है या तो क्या कर सकता है. सेम इंट्रोडक्शन might not get you the result that you're looking for. Okay. Any questions here? One thing that I've noticed, and I think a lot of people will understand this, कि क्या होता है ना, जब आप किसी से मिलते हो और आपने दो तीन मिनट चलो बात कर लिया, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने थोड़ा सा अपने बारे में बता दिया या उसको पूछ लिया, उसके बाद देयर इज अ ऑकवर्ड साइलेंस कि आगे क्या बात करें. राइट ये होता है. यस होता है मैम. होता है ना. दिस इज वेरी कॉमन. what you need to do is, and this is something that I practice personally, इतने साल से मैं करते आ रही हूँ, जो भी आपके अलग अलग टारगेट ऑडियंस है, आपके क्लाइंट्स है या तो आपके दूसरे सीएस से मिल रहे हो, या तो आपको लग रहा है कि कोई कंपनी वाले हैं, अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे आपको वहां पे. राइट हर एक के लिए प्रिपेयर अ सेट ऑफ 5 और 6 टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन. लिख के रखो. राइट दिस पॉइंट फॉर योरसेल्फ. अभी नहीं करना दैट्स फाइन, आपको कल परसों में कभी करना है चलेगा, बट prepare a set of questions for each kind of people you are going to meet, and you have in mind कि मुझे ऐसे लोगों से मिलना है. उन your target audience के लिए keep a set of questions prepared, a set of topics of discussion prepared कि मुझे इन लोगों से ऐसी बातें करनी है. Okay, so what happens is you won't have that awkward silence, plus उसी बातों में से देन आपके कॉन्वर्जेशंस और निकल जाएंगे. लेकिन हैव अ सेट ऑफ टॉपिक्स सेट. ओके सो फॉर एग्जांपल आप दूसरे सीएस से मिल रहे हो. ओके आप क्या क्या बातें कर सकते हो. यू कैन टॉक अबाउट उनका ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग टू ग्लोपैक, कौन से सिटी से है, वो उस सिटी में क्या काम करते हैं, एंड आर दे लुकिंग टू एक्सपैंड, और what kind of practice, if that person is practiced for some, what are the challenges in practice that they are facing. या आपका कोई challenge है तो पूछो कि I have this challenge, क्या आपका same है, and how did you overcome this. Have a set of questions prepared so that you're never out of topic of conversation. ठीक है. किसी से आप फ्लो में बात कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कभी ऑकवर्ड साइलेंस आता है तो आपका दिमाग भी चलना चाहिए कि हाँ आई कैन हैव दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स टू टॉक ऑन. प्रेपरेशन विल ऑलवेज कीप यू कॉन्फिडेंट कि मैं कभी आउट ऑफ टॉपिक्स नहीं बनेंगे. ओके आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज यूज दिस, बट दिस विल हेल्प यू ब्रेक दैट ऑकवर्ड साइलेंस कभी भी जब भी आपको फेस करना पड़े तो. Okay, so write this point, prepare this later, that's fine. जो भी आपके target audience है उनके साथ 5 topics each आप क्या क्या बातें कर सकते हो. Okay. Okay. I'll discuss this only if I get a positive response. आप लोग में से कोई है जिनका लिंक्डइन भी है, वेबसाइट भी है, या काफी सोशल मीडिया लिंक्स है जो आप लोगों को जनरली देते हो, या तो आपने ई बुक्स लिखा है, या तो कुछ पब्लिकेशंस के बारे में आप डिस्कस करते हो. इफ एनीबडी इज देयर, ऐसा कोई है जो आप you ask your audience. So for example, when I am meeting, I generally talk about my ebooks or I talk about my LinkedIn profile वगैरह. So I have 2-3 links to give to the audience. Is anybody there? Only then I will talk about this. Yes, I'm here.
Ma'am, not a website, LinkedIn and social media, in all social media Most platforms. of the professionals would be on LinkedIn. LinkedIn, yes. Well, that's one link, right? काफी लोग होते ना कि अरे I also have a YouTube channel, for example, I have a podcast as well, so मैं उसका भी link दे. So there are multiple links that I need to give. So when you have multiple links, what you can do is there is an application called Linktree. Okay. We give that to our anybody, you know, who is coming to our office, बोलो या जो भी है, हम लोग उनको या गूगल मैप का लोकेशन वगैरह सब नहीं भेजते, ये भेज देते हैं, उसमें पूरा मिल जाता है. आप गूगल लोकेशन, गूगल मैप का जाना है, वहां जाओ, वहां पे लिंक्डइन मिल जाता है, वेबसाइट मिल जाता है, एनी ऑफ द सोशल मीडिया, यूट्यूब बोलो, एनीथिंग इज देयर, वहां पे रेटिंग्स है, जो भी है. तो अगर वो भेजिए ना, उसको बाद में उसको पूछने की कोई जरूरत भी नहीं मिलती. Very good. और Yes. वो भेजने के बाद थोड़ा सामने वाले का इमेज भी थोड़ा चेंज हो जाता है. Right. So I'll just show you. मैंने उसमें डालना मेरा रह गया है. I'll just show you ये ऐप कैसा दिखता है. So this app is a one stop to all your links together. Free है. You can use it for free, no charge. So what happens is when I give the link to anybody, if you can see all my links, all my links are there together. चाहे वो वेबसाइट का हो, सोशल मीडिया हो, links to my ebook है, anything, my services है, they can also click and register for my services. Anything and everything, all the links that I have is in one place. I don't need to give them multiple links for different things. Okay, and this is like a profile जहां पे आपका नाम, आपका picture, आपका all the details also comes into one page. Okay. शेयर किया है मैंने मैसेज Sorry? में शेयर किया है लिंक्स. Ah, very nice. Yes. Thank you, Nirbhay. So this is something that you can use for all your links together, and it's free. मतलब you can, it's very easy to set up. आप 2 मिनट में सेटअप कर सकते हो अपने फोन पे, and you can give just the link tree जैसे निर्भीक ने अभी just दिया. आप अपना वो link tree का लिंक दे सकते. Okay. So what happens is like networking events में टाइम नहीं होता ज्यादा. So अगर आप ऐसे सब लिंक्स दे देते हो ना, so it's very easy for the person also to remember you. आपका ब्रांडिंग बनता है. ठीक है. सेकेंड, आप बहुत ऑर्गेनाइज दिखते हो. थर्ड, सारी चीजें आपकी एक साथ है, तो आप भी कंफ्यूज नहीं हो, सामने वाला भी कंफ्यूज नहीं. ठीक है. परफेक्ट. सेकेंड, is your LinkedIn profile complete? Everybody here, is your LinkedIn profile complete? If not, please go ahead and do that before the event. Okay, LinkedIn is very useful, and I'll tell you abhi how to use LinkedIn. Okay. One more preparation that people, especially I don't know, being a woman, I think I'm more inclined to this, or men इतना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, but it is important, is prepare what you're going to wear for the next, for those 3 days. If you're traveling from other city, of course आप करोगे. Same city में हो तो आप इतना ध्यान नहीं देते हो शायद, लेकिन still think, give it a thought कि आप क्या पहनोगे और क्यों पहन रहे हो. Okay. What is it extra that you can do in what you're wearing that will again help you build a brand for yourself? हो सकता है वो नेम टैग है, या तो फिर ब्रोच है, या तो एक some tie है. Anything which helps you look different in a positive manner, but look different. Okay. Your shoes, wear comfortable shoes. Don't wear new shoes for the event. आपको लगेगी पैर में. Carry rubber bands. Why? Because people of course share their visiting cards and everything, और फिर आपके pockets में इधर सब रह जाता है. Either carry a small, Ziploc pouch or some rubber bands so that all your visiting cards are together. आपके नहीं, सामने वाले के आप भी बहुत collect करोगे, right? Now at the event, जैसे हमने कुछ चीजें की बारे में बात की मैंने पहले भी, don't sit or stand quiet for a long period of time. आपको 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए, वो सब ठीक है,
but for an elongated period of time, don't stand or sit alone. Okay, don't look lost. A lot of people look lost and कि ऐसे हम क्या करें, कहाँ जाए. When you seem lost, people don't generally approach you to talk. Okay, don't have lunch or tea alone. Like I said, this is my rule. Never have lunch or tea alone. Don't stick with one person कि आप वो एक ही इंसान के साथ या एक ही ग्रुप के साथ घूम रहे हो. Don't do that. Have fun. People love talking to people who are having fun, who are having good conversations, हंसी मजाक या तो फिर very friendly. ऐसे लोगों से बात करना लोगों को भी पसंद है. So when you look that person who's having a lot of fun, people will come and talk. Don't talk only business. Business की बातें करते करते सब बोर भी हो जाएंगे. Have some good conversations as well. Try to meet the same person again. Now, this is very important, and I'll share my experience how this has helped me. I'll just take a recent example. Startup Sphere was 2 days, right? First day, I met few people. उसमें से 2-3 people were very important for me in the sense I thought they'll be my potential clients or somehow I can collaborate with them. What I did the second day is I again gave them a call and I again met them. उससे क्या होता है? The bonding gets stronger because I knew somehow, even if I felt there's no direct connection, I had that intuition or I had that, this thing कि I want to meet this person कि हो सकता है there will be some, collaboration, there might be or there might not be, but I want to build a bond with this person, and that really helped me. उसमें से एक जन became my client, second say I've collaborated, and third will be the one आज that person will take and explain something जिसके साथ ICI के साथ collaboration कुछ किया है, उसके बारे में that person will talk. ठीक है? So this is how when you take efforts, पता है हमने efforts की बात की. When you take efforts to meet somebody and show your interest, वो इंसान आपको याद रखेगा. Okay? So these are something. Now grooming may, again, my personal experience, your body odor matters a lot. Please wear good perfumes, carry pocket perfumes with yourself because again, AC होगा ठीक है, लेकिन still there'll be so many people, हो सकता है गर्मी हो जाए, carry a perfume, छोटे छोटे perfumes आते हैं आजकल, carry those with you. Mouth odor, you're eating anything, you're drinking tea and coffee regularly, that leaves a smell in your mouth. और जब आप इतने crowd में आप बात कर रहे हो, it does not, personally I've faced this, नहीं अच्छा लगता है. So please carry some mint or keep drinking water so that mouth ka odor goes away. Okay, and of course carry your essentials like comb, mint, आपको जो भी चाहिए, carry it in your pocket. Very important. Pre-event steps, and trust me, this has changed the way I am networking. Okay, LinkedIn post. How many of you have already posted that you are attending the GloPAC event? Nobody? Not on LinkedIn. I put out some statuses on WhatsApp from which I got some responses, and to this group also I was added because someone in my known got me added to this group because of my status. Okay, fantastic, super. Okay, now LinkedIn is very good, Raghavendra. Now LinkedIn is very powerful, and again, this is something I started using like from a year where I am doing this. Whatever event I attend, now these are the steps that I take. Okay, I post that I am attending this event and what do I expect from the event. Okay, I use the hashtag. Now what I did even for the GloPAC is I went on LinkedIn, I typed hashtag GloPAC. Whoever has used GloPAC in their post or in कोई भी पोस्ट में GloPAC यूज किया है वर्ड, उनका पूरा लिस्ट आ गया. I went, I connected with them, I sent them a message,
especially if I looking at the profile, I feel this person will be very, very, beneficial as a connection. I messaged them that, hi, I am attending GloPAC. This is my introduction. Looking forward to meeting you there. Let's connect over WhatsApp so that we can meet and connect at GloPAC. This I used even in Startup Sphere, which happened in Mumbai. And trust me, it was a game changer for me. I met so many people through this because, again, like you said, pata hai, udhar jaake you were lost. किससे बात करे, क्या करे, कैसे करे, किससे initiate करे. But when you have messaged like 40 people on LinkedIn जो attend कर रहे हैं, you end up meeting at least 20 of them. You get that confidence. और क्या होता है, उनके थ्रू आप और 10 जन से मिलते हो वहां पे. This is the way you start networking, not being lost, and a very focused network. So what I want you all to do today is, या तो tomorrow, आज finals enjoy करो, कल कर लेना. पहले तो post डालिए. वो post कैसा भी हो सकता है, directly डाल रहे हो, you're asking people how many of you are attending. जैसे भी आपको डालना है, आप डालिए post. GloPAC का hashtag use करके take out the list of people who are attending GloPAC. Message them, connect and message them and ask for the number so that you can meet over there. वहां जाके उस दिन पे then you send messages and you ask, let's meet. I am here, you then coordinate and meet over there. Okay. Tag people you think are attending. This helps in cross-selling. Now, कैसे ये work करता है LinkedIn पे? Why this works? Say, for example, after today's session, I tag all of you and say, these people are attending GloPAC event. अब आपके network में कोई देखेगा the rest of the people's name. When you are tagged and you like the post, people in your network will also see the rest of our name. This is cross-selling on LinkedIn. So tagging people really helps in the cross-selling. So आप वो tag भी कीजिए कि आपको पता है आपके जो known में है 4-5 जन आप attend कर रहे हो. So put up a post and ask them to like or comment on the post. तो उनके wall पे भी पहुंचेगा. And people who are connected to them will also see. So use the platform like this. Okay. Any questions here? I've personally done this. I've messaged a lot of people and a lot of people, I think यहाँ पे भी काफी जन ने उसी के through reply किया था and we got connected. And this is how you start connecting with people. How many of you will do this tomorrow? Thanks, Timir. Super, Raghavendra. Chalo, I'm looking forward for all 17 of you to do this. Huh? Because, okay, chalo. Now comes the most important, जो काफी लोग भूल जाते हैं या तो फिर छोड़ देते हैं. Event attend करना इतना जरूरी नहीं, of course आपको वहां रहना पड़ेगा. But the most important step of any networking event is the post-networking steps. आप जाते हो, विजिटिंग कार्ड्स कलेक्ट करते हो या अपने विजिटिंग कार्ड्स दे देते हो. वो विजिटिंग कार्ड्स या तो फाइल में चला जाता है या आपके बैग में चला जाता है और आप जनरली भूल जाते हो. या क्या होता है, आप भूल जाते हो कि आपने उनसे बात क्या किया था. आप 1-2 हफ्ते बाद वो विजिटिंग कार्ड्स खोल रहे हो, याद करने की ट्राई कर रहे हो ये इंसान था कौन और इससे मैंने क्या बात की और ये मुझे क्यों इंपॉर्टेंट है. आप भूल गए बिकॉज यू मेट सो मेनी पीपल, राइट. सो द post event का 1 week is very crucial where you need to connect with people. Okay, 1 हफ्ते के अंदर आप उन सब लोगों को मैसेजेस भेजोगे जिनसे आप मिले हो. Now these are few sample messages that you can use. और ये प्रिपेयर करके अभी से रखना बिकॉज इवेंट के बाद आपको शायद टाइम नहीं मिलेगा या आप भूल जाओगे.
या तो यू विल गेट लॉस्ट। अभी से प्रिपेयर करके रखो, आपको सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स करना है और आपको सबको एक साथ भेजना है उनके नाम के साथ। Hi, this is CA XYZ. We met at the GloPAC event of ICI. It was a pleasure meeting you and discussing brackets. You have to write what did you discuss. This shows your efforts in remembering the person and the kind of conversation you had with that person. ये एक game changer है. If you just write hi, it was nice meeting you and everything, वो तो पता है सब शायद एक दूसरे को भेज दे. But when you talk about exactly what did you discuss and what kind of conversations you had, it shows your efforts और आपका bonding और strong हो जाता है. Okay. Now what I've done is I've segregated this message into 2-3 types. One is a very general message जब आपको लगता है कि that person is not your direct connect or direct client नहीं है, या आपको लगता है general connection है, आप उनको ऐसा general message भेज सकते हैं. अगर आपको लगता है उस इंसान के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, यू कैन सेंड दिस काइंड ऑफ मैसेज एज डिस्कस्ड और एज पर आवर कॉन्वर्सेशन आई कैन सी अ सिनर्जी इन आवर वर्क एंड would want to get on a call to discuss some ideas that I have. Let me know when you are comfortable for the same. Okay, and if possible write a date and time. ये हो गया कोलैब का. समझो आपका टारगेट ऑडियंस एज अ क्लाइंट. हाय, दिस इज दिस वी मेट एट ग्लोपैक. इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड डिस्कसिंग दिस. आई एम शेयरिंग अ ब्रीफ प्रोफाइल. सबको प्रोफाइल जबरदस्ती का मत भेजना. आई एम शेयरिंग अ ब्रीफ प्रोफाइल और वेबसाइट ऑफ माई वर्क. आई बिलीव आई कैन एड वैल्यू टू योर वर्क. Let me know if you are comfortable for a call and we can discuss this in detail. Ask for permissions. Okay. So अगेन मैं पीपीटी शेयर करूंगी, आप इसको बना के अपने लिए रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ सेकंड थिंग व्हाट यू विल डू एंड आई वांट यू ऑल टू डू इज एट द इवेंट क्लिक पिक्चर्स विद सम पीपल. ओके, जितने लोगों के साथ हो सकता है पिक्चर्स क्लिक करो. कीप मेमोरीज एंड देन विद देयर परमिशन पोस्ट इट ऑन LinkedIn. Like I said, cross selling. You have to post about what you attended the meeting, what did you learn there. Again, use GloPAC. जो steps आपने पहले किए थे वही steps आपको event के बाद भी करना है. Hashtag GloPAC use करना है. Start messaging people जिनको आपको लगा कि that person also attended but you couldn't meet, तो message करो. This is again something that I did. Hi, I saw that you attended GloPAC. I missed meeting you over there. प्रोफाइल विजिट करो, देखो कि अगर वो सिनर्जी है, कोलैबोरेशन है, क्लाइंट है, जैसे भी आपको फिर वो मैसेज जो आपने प्रिपेयर किया था आप वैसे का वैसे आप उनको भी भेज सकते हो. ओके, कि आई मिस्ड मीटिंग यू, लेट्स गेट ऑन अ कॉल एंड डिस्कस. टैग पीपल यू अटेंडेड द इवेंट विद. यूज फोटोज, दोज आर वेरी पावरफुल टू शो. जैसे कि स्टार्टिंग में आई थिंक किसी ने बोला था कि जब आप फोटोज वगैरह डालते हो, प्रशांत जी ने बोला था, जब आप फोटोज और ये सब अपने इवेंट्स के बारे में डालते हो, लोगों का भरोसा बहुत बढ़ता है आपके तरफ कि आप एक्टिव हो, आप बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हो, यू नेटवर्क विद पीपल एंड यू कीप लर्निंग, यू वांट टू अटेंड दीज काइंड ऑफ इवेंट्स. ठीक है, सो दीज आर द पोस्ट इवेंट स्टेप्स दैट यू विल बी टेकिंग. यहां तक क्लियर एवरीबडी? Yes. Any questions or any things that you have in mind? Okay. Yes, Gaurav ji. No, ma'am. No question right now. Okay. See, the main aspect of these events is to have fun. Don't forget to have fun, enjoy, keep smiling, keep laughing. First, of course, आपको भी अच्छा लगेगा. Second, people like talking and people like networking with people who are lively. So have that liveliness there. Now we are 16 here and we are
almost 50 in the group. Never feel that I don't, never feel that, you know, you don't know anybody. किसी भी point of time जब आपको लगता है कि, you know, you're standing alone or you don't have anybody to talk to, give a call or message anybody from the WhatsApp group and meet them. Make those efforts. Okay? You'll never feel alone. ठीक है? So one thing. Can you organize a? Yeah. Am I Yes, yes, audible? please. Yes, yes. Yeah. Can you organize a separate meeting of all the group members in Ahmedabad? Perfect. I'll do that. मेरे दिमाग में वो था, but I'll definitely do that. We'll discuss in the group and Okay, we'll ma'am. Thank you. figure out कि हम कब क्या कैसे मिल सकते हैं. Sure, sure, sure. Perfect. Thank you. Super. Thank you, Gaurav. Thank you. Okay. Now one question. हमने visiting cards के बारे में बात ही नहीं की, right? And there is a very specific reason that I didn't speak about the visiting cards, because this time ICAI has come up and collaborated with somebody that I know. He's the, you know, the official person who's collaborated with ICAI to take out the headache of visiting cards from you. अभी आप अगर visiting card नहीं भी लेके जा रहे हो, you know, it's perfectly fine because there is a solution to it. Okay. So I would like to hand it over to. Yeah, hi. Krupal, you there? Yeah. Hi, Hi, Parini. Krupal. Hi. Hi. Good afternoon, everyone. So this is Krupal Shah. He has application mymeet.io, and they have collaborated with ICAI and they have come up with a solution to, you know, do away with the headache of the visiting cards. मैं इतने stress में थी ना visiting cards को लेके. Although I carry a tap का card, what is it called? Krupal? NFC card. Yeah. NFC cards. I carry that, but still it is a headache to, you know, receive those cards also. So thank you so much, Krupal, for coming up with this. And I'll give the stage to you. You can share your screen and show everybody. So this is this is nothing, you know, this is a collaboration with ICI and it will be done for everybody attending the event. So आपको सिर्फ ये मैंने ये आज इसके लिए रखा because this is something या तो आपको अभी कर लो या इवेंट में करना ही पड़ेगा. So better है कि आप अभी से, if you are acknowledged, you know about the process, it will be very easy for you to get used to, you know, using this thing at the event. Okay, so thank you so much, Krupal, for, you know, sparing your time for us today. No problem. My pleasure. First of all, congratulations, Parinita. It was a, you know, great session, and almost every point, you know, in detailed manner you have covered, and it will be very beneficial for all the attendees here to, you know, network and all. So yeah, okay, jumping on the, you know, topic. So guys, I'm sharing my screen. So this is the unique networking thing that will be happening at GloPAC. I hope my screen is visible. Yes, it is. Just can you confirm? Yeah. Okay. All right. So okay. So what the procedure is, everyone who is attending the GloPAC event will receive the unique QR code like this, right? With the name and the phone number, email ID, and all that stuff here. Now, I am just taking the, you know, demo. So I am taking this demo of Parinita and Ishan. So suppose Parinita is meeting Ishan. There is no visiting card involved. जो बंच होता है, you know, the visiting card का life story क्या होता है, it gets exchanged, वो जाता है वो bunch में visiting card के, and then goes to the dustbin or drawer or, you know, file or something like that. जो lead होती है वो convert नहीं होती है, right? So we have to take care of this thing. Now visiting card कहीं पे भी picture में नहीं आएगा. What Parinita will do is, Parinita, can you just scan this QR code from your phone? The Sure. link is on WhatsApp. Yeah. Parinita will just scan Ishan's QR code from her app, right? From her app means Parinita के पास ये जो app है,
ऐप मतलब लिंक आएगा, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एनीथिंग, राइट? यहाँ से ये यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है, शी विल जस्ट ओपन दिस एंड स्कैन दिस QR कोड, राइट? Scan this QR code of Ishan from here. So once she scans this, I'll tell you the next what happens. Let me know once you share this, and if you want me to zoom a bit, I can do No. this. I can scan it. Yeah, you scanned? Yes, yes. Okay. Now Parinita has scanned, right? You saved, right, Parinita? Yes. All right. Now, after the event, Parinita will be, scanning this QR code for all the peoples whom she is meeting in the event. Now, without exchanging the QR code, this visiting card, Parinita, did you save? It is not showing that you saved this. Why it's saved? So we had done this before, and if you can Yeah. see, मेरे इसमें या सो चलो कोई नहीं. सो ये मेरा स्कैनिंग हुआ था, राइट? सो कल हमने ये डेमो जब किया था, सो ये मेरा QR कोड उन्होंने स्कैन किया था. सपोजिंगली ये ईशान का ही QR कोड है. नाउ आफ्टर द इवेंट टोटल लीड्स विल बी हियर, राइट? सो टोटल परिणीता इज मीटिंग 50 पीपल का लिस्ट विल बी हियर, right? यहाँ पे all the points will be there, including points discussed. So Parinita can mention what points that you have discussed. Supposingly someone has mentioned that Adani में contact है या फिर AI में I am expert. You can just mention these points for your reference to recall. people just a sec. Yeah. So when Yeah. we discuss ना, जब हम मीटिंग वो हम बनाएंगे मैसेज की हम बाद में भेजेंगे. I told you I'll tell you how to remember. Once you meet the person, you scan the QR code and you're saving the contact. तुरंत में please write it over here, the kind of discussion you had with that person. Okay, any interesting point or any meaningful point that you discussed, you can quickly write it and save it for yourself. Okay, yes, Rupal, go ahead. Yeah, right. And there will be a search option here as well. So you can search after the event by whatever name you remember, right? Either it is the name of the person or the name of the company or firm name or the point discussed. You just search it and entire list matching with that name will be coming here, right? Now you have three options. One is call directly from here, save contact, and book a meeting. Once you click on this book a meeting, you can open this kind of landing page. So this is the Parinita's page of MyMate. This is the branded landing page, come appointment booking page, right? Now this page can be look like this as well, and this page can look like this as well. Now this is all your choice what to mention here. This is the the kind of your e-visiting card, but mentioning all your details, what you do, all your social media links at one place, and also it reflects the branding of your firm or your your company, right? Now once someone clicks on this thing, whether he books your meeting or no, he'll be able to understand what you do exactly, and he'll be able to access all the LinkedIn or all the social media links from one place, right? Now supposingly after doing this he wants to talk to you, right? So he just required to mention the topic or select the topic. That topics are mentioned by you, these topics are set by you. Once he selects this, वो यहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी चेक करेगा, तो कैलेंडर यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस अवेलेबिलिटी इज set by you. You have made this yourself available as per your convenience, and the सामने वाला person is booking your time as per his convenience. So this is the win-win situation for both of you. Supposingly 10:30 को वो book करना चाहता है and book my meeting करेगा, यहाँ पे नाम नंबर डाल के they can book the meeting, and agenda में they can mention the things as well. You both get the WhatsApp message for the confirmation of meeting and email as well. Since this is an international event, it is not necessary that the person you are networking is of the same city, and there has to be the virtual meeting has to come into the picture, right? So this purpose will be solved from here, right? So this is the stuff
So this QR code you will be getting via WhatsApp broadcast. एंड आपका जो बैज रहेगा वहां पे फिजिकल बैज आपको मिलेगा, वहां पे भी दिस सेम क्यूआर कोड विल बी देयर, राइट नाउ। ये एक बार आपका पूरा हो गया, राइट, इवन वी आर एडिंग अ टैब here that it will show the person whom you scanned and the person who scanned you, right? So it is very easy for you, even if you are missing out to scan someone's QR code, सामने वाले person ने आपका QR code अगर scan किया हुआ है, you will be able to locate them here in this category, right? So it will be very easy and effectively, and no leads will be missed out. So ये बात हुई अपनी participant to participant की. Now वहां पे exhibitors भी रहेंगे, so exhibitor will also scan this QR code of yours. So उसके पास आपकी details चली जाएगी, उनका digital brochure आपके पास आ जाएगा, so you will not be required to carry all those heavy files, physical copies, and take care of them and all that stuff, right? So वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा, WhatsApp में you will get this thing, ठीक है? And yeah, so this is the the simplest thing that the ICI with MyMeet and VZT have come up together to facilitate this. And yeah, So the any questions? point is, I'm yeah. so our point is, everybody here present, you will be required, or it will be very beneficial for you कि अगर आप अभी से create that account on mymeet.io, and जो भी ब्रांडिंग का स्टफ है, जो भी आपको लिंक्स वगैरह डालना है, आप अभी से डाल के रख दो, so that वहां जाके आपको ये सब स्टेप्स नहीं करना पड़े. Okay, Yeah, you're already prepared for the event, and you Yeah. already know what to expect and how to do the process. वहां जाके आप confused नहीं हो कि मैं इसका करूं क्या. राइट, सो द प्रोसेस विल बी, मैंने वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है चैट में, राइट? यू कैन गो एंड क्रिएट योर अकाउंट. इफ इट इज नॉट ओके, दिस इज नॉट लिंक, आई पिंग ऑन दी व्हाट्सएप, राइट? व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे मैं डाल देता हूँ. सो इफ द अकाउंट इज ऑलरेडी देयर, योर एग्जिस्टिंग अकाउंट विल बी कमिंग in this networking thing, right, in this book meeting tab. If your existing account is not there, your account will be created and the credentials will be, you will be receiving the credentials via broadcast or email, right? So you are just required to go there, set your profile like this, make yourself available, and you are done. So this is the great place to show who you are, to to reflect your brand, and to navigate from one place to another place. And this is, as Parinita mentioned, एक जगह पे सब link आती है, so how beneficial it is for सामने वाला person to find you across the place. Yeah, so this Can is you how take it the works. screen to जहाँ पे मेरा नाम आया ना as a lead, वहां पे लेके जाओगे एक बार? हाँ, this wait. So At this place? Shailesh, your question कि समझो आप किसी से मिल रहे हो जिसने mymeet.io पे अभी तक अकाउंट नहीं बनाया या तो डिटेल्स नहीं फिल किया, उससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसका नाम और नंबर आपको फिर भी आपके लीड्स के लिस्ट में आ जाएगा. Yes. ज्यादा से ज्यादा जब आप बुक करोगे मीटिंग, वो आपको पूरा डिटेल्स नहीं दिखेगा, बट दैट इज फाइन. कॉन्टैक्ट आपका इररिस्पेक्टिव आ जाएगा आपके पास. आप उसने अभी तक अकाउंट बनाया नहीं बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. या सो अकाउंट बन जाएगा. सो सी, कहने का मतलब ये है कि हम जब तक वो लिंक नहीं करते, राइट, विल गेट द एंटायर लिस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम ICI. सो बिफोर दैट, इफ यू आर क्रिएटिंग योर अकाउंट, तो आपका एग्जिस्टिंग लिंक वी विल बी यूजिंग. अगर आपने उस टाइम तक अकाउंट नहीं बनाया है, तो योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. बट द थिंग इज, आपको आपका ब्रांडिंग एंड आपका प्रोफाइल आपको सेट करना पड़ेगा. इफ यू आर नॉट सेटिंग अप दिस प्रोफाइल, the person who is clicking on this book meeting, उसको ये सब blank दिखेगा, right? There will be some orange color, यहाँ पे photo नहीं रहेगा, and logo नहीं रहेगा, so it looks something odd, right? And if ICI is doing this thing कि भाई आप आपका effectively आप communicate कर सकते हो who you are, so better to set this profile, and this takes only 5 to 10 minutes to set one time profile, right? And this account will be in place, and this is free account that will be generated, so you are not required to pay anything for this, right? So this is the thing. Yeah, Parinita. Perfect. Thank you so much, Krupal. See, the point is,
आपको ये इररिस्पेक्टिव करना ही पड़ेगा। वहां जाके उससे बेटर आप अभी से आप ये अपना ना ये स्टेप्स आप कर लीजिए। ओके रूपल, आपको और कुछ दिखाने? यू कैन स्टॉप शेयरिंग। Yeah, I can stop sharing. Perfect. So prepare all these steps in advance so that over there you're not wasting your time on all this and you look and you feel confident. Okay, and this is really a very good step because you genuinely forget कि आपने कितने लोगों से मिला, क्या डिस्कस किया. So what I used to do previously is write on the each person's visiting card कि मैंने उससे क्या बात की थी. But this genuinely solves all that hassle. एक ही जगह पे you're getting all the details. आप किस किस से मिले, क्या बात की, उसका कांटेक्ट क्या है, everything comes into one place. So thank you so much for coming up with this, Krupal. I hope My this is this gets there with the ICI for all the events. So वो visiting cards का hassle ही खत्म हो जाए. Okay, so I am seeing Shailesh Patel has one question. Do we need to ask other person to download this app? No. So no one is required to download this app. So when you get your, this QR code from the agency, right? आपका जो QR code आएगा, वहाँ पे नीचे एक link रहेगा. Access the networking apps, something कुछ करके. Once you click on that app, you will get that, वो जो अभी हमने वो QR code वाला दिखाया था, that gets opened. Right, and you can just save that thing in add to home screen करके आपके home screen पे आ जाएगा और you can access that link as and when required. ठीक है, so no one is required to download anything. If you are scanning someone's QR code, तो वो QR code सामने वाले के बैच पे already रहेगा. So even he is not required to show the QR code of him via phone, right? So just scan पे आप scan कर लो, मतलब वो बैच से scan कर लो and you are done. Okay, so one thing, as a courtesy, as etiquette, बिना permission लिए please जाके सबके scan मत करते रहना. Yeah. Weird. When you're meeting somebody, please politely ask, can I scan the QR code for your details? Yeah. अपने आप So फोटो मत खींचते रह जाना. yeah, so this is just the the replacement of exchanging visiting. How we Right. exchange the visiting card, right? After communicating for 3 minutes, and then we say here So this you is have the to be visiting card. courteous. Yeah. Okay, it's not a right कि चलो QR code है तो मैं तो scan करूंगा, आपका permission हो नहीं हो. Yeah. Just थोड़ा सा लिहाज, and especially अगर सामने वाली मतलब it's a female, it's a women CA, please take care of all of that. Yeah. Okay, so thank you so much. Does anybody has any specific question? So what we'll do is, like we said, we all will connect with each other. We'll meet over there. We'll try and plan a separate meet for all our WhatsApp group people so that we network better. Wahan pe have fun, but keep your focus in mind. Whom do you want to meet? Take a target. I have to meet 40 people which are from this background or 40 such clients or collaborations. Make sure you complete that goal and make sure, most importantly, you take the post-event steps seriously within a week. एक हफ्ते के बाद लोग भूल जाते हैं conversations, ना नाम याद रहता है, ना चेहरा याद रहता है. So please make sure आप उस timeline में you take all those steps and you make good use of LinkedIn also. Okay. So we are always there on the WhatsApp for any queries. Let's connect to each other and let's try to solve each other's queries. Thank you so much, Krupal, for sparing your time and coming up with this idea. My pleasure. And thank you so much, everybody, for being here. Any questions? We are always available for to connect. Yes. I just want to ask that कि हमने कोई ग्रुप अभी कुछ बनाया हुआ ऐसा कुछ है क्या? हाँ, एक WhatsApp ग्रुप है. आप एक काम कीजिए, मैं वो लिंक शेयर कर दीजिए. हाँ, मैं ये लिंक, वो WhatsApp ग्रुप का लिंक मैं यहाँ पे आपके चैट में शेयर कर. ओके. जी. Thank you. Most welcome. Parinita, can I connect with you on one-on-one basis for a brief talk on something specific? Yes, please, anytime. So this is my When number. should it be? Okay. Timir, एक काम करोगे प्लीज, ये मेरे नंबर पे WhatsApp भेज दोगे?
So I'll add you to that group. Yes, sure, ma'am. Definitely. Okay? जी. And Vinita, yes, we can connect one-on-one. When should it be convenient for you? Tomorrow, post lunch. Sure, fine. Thanks. Okay, sure. Thank you so much, everybody, for being here. All the Thank best. you, everyone. Looking All forward the to best. meeting you all. All right.